Hello everyone, good afternoon and welcome to PRATHAM Test Prep. I welcome each and everyone here who is watching this YouTube session. And as we know that every Tuesday and Thursday we have a new initiative that we deep dive. Again we have started. So every Tuesday I will be responsible for taking session here, and one day that is Hema ma'am will take the session sharp at 3 p.m. Time is same but days are different. So in Thursday that Hema ma'am will take session at 3 p.m. So geopolitics and geo-economics of India. So deep dive, what was the concern to taking deep dive? Basically, as we know that in CLAT exam there are many passages based questions. So students need to very familiar that whether the passes will, what kind of passes will ask in your exam. This will help you out in the reading comprehension also, because the many words that you need to look it out in synonyms, antonyms, one word substitution, idioms and phrases, and many more words. And other things that if you are very familiar with the passages, so you must have to inculcate the reading practice so that you will be able to solve the questions. While the GA general awareness and current affairs is concerned in the CLAT exam, and this YouTube session especially for the CLAT, but that does not mean it's only confined to the CLAT. But if any students who is from the CUET exam is willing to watch this, and because this topic is usually for the students who is from, like we can say, the topic is taken from the newspaper, and the newspaper is that the Hindu or Indian Express, or we can see like one more, like we can say like Economics Times and Business Standard. सो क्लाट एग्जाम में आपके बहुत सारे पैसेजेस होते हैं, और उस पैसेजेस के लिए आपके पास रीडिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक आप रीडिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपका, इफ़ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस यू विल फेस द डिफिकल्टी. सो anyway, the topic is geopolitics and geo-economics of India. So a little progress each day adds up to big results. So try to follow the things every day in the daily basis, because the reason behind, अगर आप डेली किसी भी चीज़ को करते हैं तो आप देखो यहाँ पे जो आपके एम्बिशन है उसे होने में बहुत कम टाइम आपका कंज्यूम होगा, राइट. सो यू हैव टू वर्क ऑन द स्किल्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर इज़ द आर्टिकल इज़ geopolitics without geo-economics a fool's errand. And I am just announcing you to every students, like कि जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस यूट्यूब सेशन को, प्लीज़ शेयर टू ईच एंड एवरी वन, बिकॉज दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे जो भी सेशंस देख रहे हैं, what we want and why this session is organized. Reason behind, irrespective of any student, whether they are from the government school, they are from the private school, they are Delhi, they are beyond Delhi, they can get advantage. तो आप इसे मैक्सिमम नंबर तक स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए, सो दैट कि बहुत सारे बच्चों को ये बातें हों कि यूट्यूब सेशन जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी है, दैट इज़ अ डीप डाइव. चलिए, सो this article is basically talking about geopolitics and geo-economics, a fool's errand. तो डीप डाइव हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को हम बहुत लेंदी तरीके से बताते हैं, और सो दैट वी गॉट टू नो कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें. तो हमें क्या देखनी चाहिए इस आर्टिकल में कि व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स. इनिशियली वी नीड टू लुक इट आउट व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स, and then we need to look it very carefully what is geo-economics, and we have to follow what is the role of ASEAN country, and we need to keep in mind that what is the free trade agreement, and what is the importance of IndoPacific. So as we know that this article written by the professor is Happy Nom Jacob, is an associate professor, Center for International Politics, and he is a professor of JNU, which is Jawaharlal Nehru University, New Delhi. So as we can see, what was the role of geo-economics and geopolitics in the concern of India. So if the word is here, why New Delhi is missing. So New Delhi, which means why India is missing. So India's vision for the Indo-Pacific appears half-baked and unsustainable in the long term, given in the inadequate alternative, and India is prepared to give the geo-economics politics. So initially we need to understand what is geo-economics and geopolitics of our country.
because the reason, until and unless we will not understand the nitty-gritty of the subject, that then we are not able to understand that what exactly passing is trying to convey. So, and one more thing that we can say, that here is a free trade agreement. So only 5 to 6 points that is you need to keep in mind: geopolitics, geoeconomics, ASEAN country, free trade agreement, what is the role of Quad, also quadrilateral dialogues, and Indo-Pacific region. So we need to understand first, like, what is geoeconomics and geopolitics, why it is in news. Over the recent years, Indian maneuver, which means that we can say that something should be very carefully, and Indo-Pacific have highlighted the India geopolitical and ambition. Pandemic and Chinese incursion in Ladakh forced India to move fast to achieve geopolitical ends. However, missing link in India endeavor to geoeconomics. So we need to understand that what exactly geopolitics. So in a simple and lucid manner, we can understand this. Geopolitics is defined as a struggle over the control of geographical entities with an international and global dimension, and the use of such geographical entities for political advantage. In geopolitics, we can say that defined as the struggle over the control of geographical entities with an international and global dimension. में आपके क्या struggles नहीं है, and the use of such geographical entities for the political advantage. And what exactly geoeconomics is defined as the combination of economic and geographic factors relating to international trade and governmental policy guided by geoeconomics. So geopolitics and geoeconomics are sometimes used interchangeably. So this is, we need to understand what exactly geopolitics and what exactly geoeconomics, and what is the impact of geopolitics and geoeconomics. If we need to understand that, we need to keep in mind that, like, if your country's geopolitics was not good, geopolitics, which means that in the short manner we can say, so what was the strategic relationship with the other countries. And one more thing that we need to understand, like, what is the role of India in concern with the other free trade agreement and other regional comprehension partnership. So before we start, like, we have understand like what is geopolitics and geoeconomics. As we know, India has shown a great desire to be part of geopolitical development in Indo-Pacific. However, the efforts taken to India seem to insufficient, as India requires shifting from geopolitical to geoeconomic policy. Why I am trying to say, because as we know that economy lead a country, and why it is need to be understand, because the reason behind, like, the whatever the economies are at the time of British time, as we know that their policy that was intervention in our country. And one more thing that we need to understand, like the time of British era, British India, most of the East India Company established their own factory in the different parts of our country, and economically they ruled our country. And then we can say that, so if the country is ruling here as an economically, and that was the reason that it was happening at the time of independence since 1991. That was a time of LPG reforms, which is known to be a liberalization, privatization, globalization. And why this was occurred, the reason behind India, our economy was closed economy, and 1991 में हमने अपनी economy में LPG reforms किए. That was on that time we have adopted mixed economy. So India focused still on geopolitical aspect rather than geoeconomics, while the advanced economies have moved beyond that. This is evident that India's decision to away from trade pillar of Indo-Pacific economic framework. अभी IPEF क्या होता है और इंडिया का हमारा Indo-Pacific region क्या है? So let me understand first कि ये हमारा क्या है. देखो, ये हमारा Indo-Pacific economic framework है, IPEF. What is the significance? IPEF will help regain credibility in the region after pulling out the Trans-Pacific Partnership, help US counter aggressive trade commitments made by China under TTP RCEP grouping. As we know that the RCEP, which means that Regional Comprehension Economic Partnership, Regional Comprehensive sorry students, RCEP, which means Regional Comprehensive Economic Partnership.
and India was a member of RCEP, but in 2020 India was out in RCEP. The reason behind, the government wants to promote the indigenous industries, that's why. So the policy was announced by the President Joe Biden in October 2021 East Asia Summit. IPEF will contain various modules and countries have signed up to all the components within a module. Modules क्या था हमारा? Trade facilitation, standard for the digital economy and technology, supply chain resiliency, decarbonization and clean energy, which is the goal of our SDG goals also. SDG goals, which means sustainable development goals. Sustainable development goals, and that was the goals of followed by the United Nations. That was the goal of followed by the United Nations. So can anyone tell in the comment section which SDG goals that we have to decarbonize our economy, which means that we have to less the carbon footprint so that we can achieve the green energy. Infrastructure and worker standards. Concern, what is the concern for India? We can say that is promoting the cross-border data flow against India's policy, because if we talk about, like, as we know, the many government policy that was, we can say in that time, as government has banned many Chinese app. And why it has banned? This was against the country's sovereignty of our country's security, integrity and sovereignty. That's why Indian government banned the many apps, Chinese apps. So that was a promoting cross-border data flow against India's policy, prohibition on levying the custom duties on digital products, strict labor and environment standards. This is what about the Indo-Pacific Economic Framework. While we further moving the Indo-Pacific Economic Framework and working out the negotiation of the Regional Comprehensive Economic Partnership, which India was a part, but now RCEP में India हमारा part नहीं है. So दोनों agreement में provided India with a chance to enter Geo-economics and improve its economy in the Indo-Pacific region. तो we have to understand Indo-Pacific का region कहाँ से कहाँ तक है. चलो ये भी समझते हैं कि what Indo-Pacific region. ये देखो, ये हमारा जितना भी एरिया आप यहाँ पे देख रहे हो, that is known to be Indo-Pacific region. यहाँ पे आप देखो, ये सारा हमारा Indo-Pacific region है. ये यहाँ पे Arabian Sea, here is Arabian Sea, here is the Bay of Bengal. यहाँ पे जो एरिया आप देख रहे हैं, मिड पार्ट ऑफ द अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, यमन, सोमालिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस. तो ये सारा एरिया हमारा फिलीपींस, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी, चाइना, ये सारा पार्ट हमारा किस में आता है? हमारा इंडो पैसिफिक रीजन, दैट इज नोन टू बी अ इंडियन ओशियन. सो इंडो पैसिफिक रीजन में क्या है कि यहाँ पर आपने देखा होगा जो हमारा वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. That is very very important if the wildlife sanctuary and we can say the water ecosystem is concerned. तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वन मोर थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर हम बात करें इसमें कि लाइक इंडिया पैसिफिक रीजन, so India is interested only in bilateral trade agreement और not in multilateral और plurilateral agreement. क्यों ऐसा है? Because bilateral agreement which means two. देखो, मोनो, बाई, ट्राई, पॉली, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका. ठीक है. तो आप देखो, जो बायलैटरल का मतलब होता है टू कंट्रीज जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है, दैट इज नॉट टू बी बायलैटरल. Trilateral or multilateral, which means many countries. For example, signing the free trade agreement with the UAE and the signing of early harvest agreement with Australia and United Kingdom. So most of the India के जो trade agreement है वो हमारे bilateral है. What the government wants को एटलीस्ट वो ट्राइलेटरल होनी चाहिए, सो दैट कि जितने ज़्यादा कंट्री के साथ आप एसोसिएटेड रहोगे तो आपके ट्रेड के लिए, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत आसानी रहती है. ठीक है. So that Indo-Pacific Economic Partnership we have done. ये आपका Indo-Pacific का रीजन था. Now what is RCEP? इस आर्टिकल में देखो RCEP के बारे में बातें की गई थी. RCEP मैंने आपको बताई थी कि लाइक आपका ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप is a free trade agreement scheme that is currently being negotiated between the Association of South Asian Nations and 6 of its external trade partners including China, Japan, Korea, Australia, New Zealand and India.
initially launched in at the 2011 ASEAN summits in Jakarta. Indonesia, the negotiation process of the RCEP is expected to be concluded by the end of 2015. लेकिन जब ये हमारा मटेरियलाइज हुआ, RCEP अरेंजमेंट करता है 3 और बिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड में एंड हैव ए कंबाइंड GDP ऑफ अबाउट $17 ट्रिलियन. तो RCEP में जितने कंट्रीज़ हैं सब मिला के उनके पास 17 ट्रिलियन की इकॉनमी थी एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट 40% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड. ठीक है, तो RCEP कंट्री आप देखेंगे ये सारे हमारे RCEP कंट्रीज थी. टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 3.4 बिलियन पीपल की. टोटल ट्रेड हम कितना करते थे? 40% ग्लोबल ट्रेड था. टोटल GDP में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था? $17 ट्रिलियन. अभी हम 5 ट्रिलियन की इकॉनमी का हम ड्रीम देख रहे हैं और ये 17 ट्रिलियन की इकॉनमी थी RCEP की. बट इंडिया नाउ इज़ नॉट ए पार्ट. ठीक है, तो RCEP से हम बाहर क्यों गए? द रीज़न आई टोल्ड यू, द RCEP से हम बाहर जाने का रीज़न क्या था? सिंपल सा रीज़न था कि दैट क्योंकि देखो अगर हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा, देखो RCEP द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको पता है कि चाइना अभी चावल प्रोड्यूस करता है, राइस प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है वो. अब राइस प्रोडक्शन में नंबर 1 पे अगर चाइना है तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर चाइना बहुत सस्ते राइस, हमारे जो इंडिया के किसान हैं, भारत के जो किसान हैं, इंडिया के किसान अगर उसे फॉर एग्जांपल वी कैन से, अगर इंडिया के किसान अगर उसे 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ में उसे मार्केट में बेचते हैं. मार्केट में बेचने का काम सिंपल सा होता है कि आपकी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होती है, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्यों प्रोक्योर करती है? रीज़न बिहाइंड कि उसे देना होता है हमारे पास यहाँ पे PDS सिस्टम, विच इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू से जो अपनी स्कीम्स है, अंत्योदय अन्न योजना, बाकी योजना के तहत उसको फिर वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो नहीं देती, मतलब 2 रुपये 3 रुपये में आपको अनाज देती है PDS सिस्टम. तो FCI प्रोक्योर क्यों करेगी? तो ये प्रोसेस अगर 30 रुपये की है, चाइना की चावल अगर वही सेम चावल आपकी लगा लो 25 रुपीज़ kg आएगी, तो आप बीइंग अ कस्टमर आप क्या प्रेफर करोगे? यार ये तो 1 kg में आपका 5 रुपये कम पड़ रहा है, तो 100 kg का चावल हो तो आपके 500 रुपीज़ का क्या हो गया? फ़ायदा हो गया. तो उस केस में क्या किया आपने? आप वहाँ पे इंडिजिनस जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो बाहर के किसान की चावल थी, उसका नुकसान हो गया. तो आप कहाँ किसके पास जाओगे? चाइनीज़ राइस को. सो दैट्स वाई इंडिया नाउ इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP. इज दैट क्लियर? चलो, सो नेक्स्ट देखें व्हाट विल द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन इंडिया फॉर नेग्लेक्टिंग जियो-इकोनॉमिक्स. इससे इम्पैक्ट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपका जियोपॉलिटिक्स इंटरेस्ट कम होगा, एंड जियो इंडो-पैसिफिक रीजन बाय नॉट ज्वाइनिंग द ट्रेड ऑफ IPEF विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. इससे चाइना को एडवांटेज मिलेगा. क्या एडवांटेज मिलेगा? कि जब भारत के लोग, इंडिया एब्सेंस होगी उसमें, तो बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो होंगे ऑटोमेटिकली बूस्ट चाइना के जियो-इकोनॉमिक्स अच्छी होगी, उनकी जो हेजीमोनी होगी वो अच्छी होगी, और इंडिया चाइना का जो ट्रेड होगा वो अच्छा होगा. और पास्ट 3 ईयर्स में देखो उनकी बहुत अच्छी ट्रेड्स हुई है. चाइना हो सकता है मिसयूज़ करे उसका इंक्रीजिंग ट्रेड टाइज विद इंडिया और जियोपॉलिटिकल गेन्स. It was also a great opportunity for India to be the part of trade pillar of IPEF and find an alternative to China's trade, as it is impossible to completely end trade ties with China. देखो, hamper supply chain. It would be hard for India to integrate itself into the regional and global supply chains without being a part of important regional मल्टीलेटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट. इससे हमारे बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो हम लूज़ करते हैं. एंड वी कैन से ये हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी ऑब्स्टैकल है. इंडिया इज सीरियस अबाउट इट्स मैरीटाइम सिक्योरिटी, बट इट्स कैन नॉट ओनली रिलाई ऑन द मिलिट्री फॉर इट्स सिक्योरिटी. दिस ऑल्सो रिक्वायर्स इन्वॉल्विंग अदर कंट्रीज इन इंडो-पैसिफिक टू क्रिएट इकोनॉमिक स्टेक इन इंडिया, एज इट इज़ ऑलरेडी डन बाई चाइना. India Act East policy will go back to its earlier from Look East if it does not create economic stakes with other nations. India has FTA free trade agreement with the Asian countries, but it is equally important for India to become part of trading arrangement which have major non-regional states. This would help India to become a major part of region supply chain. सो दिस इज़ वॉट अबाउट द आर्टिकल इज. इसमें आपको क्वाड को समझना होगा कि क्वाड का इसमें रोल क्या है. व्हाट कैन बी डन टू प्रूव इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ जियो-इकोनॉमिक्स. फर्स्ट आपको क्या करना होगा? इंडिया शुड रीथिंक ऑफ जियो-इकोनॉमिक प्रेफरेंस if it is serious about enhancing its geopolitical influence in the Indo-Pacific.
एंड देयर इज स्टिल एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू ज्वाइन ट्रेड एग्रीमेंट. इसके पास फिर से अपॉर्चुनिटी है IPAF को ज्वाइन करने की. ऑल्सो थिंक टू ज्वाइन अबाउट RCEP. So regional economic comprehension partnership. Second, it can also seek to join the comprehensive and progressive agreement of Trans-Pacific Partnership CPTPP. The US have walked out of this agreement and China is seeking to join it. थर्ड क्या कर सकता है इंडिया? IPEF को ज्वाइन करके हम मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को भी ज्वाइन कर सकता है. और सबसे लास्ट में इंडिया हैज क्लियर द IPEF एंड क्वाड आर नॉट मिलिट्री अग्रीमेंट. ये चीज़ भारत ने क्लियर कर दिया. क्वाड में आपके 4 नेशन है, आपको पता होगा. क्वाड में आपको मैंने बताई हुई थी कि इसको लर्न कैसे करें. क्वाड में कौन कौन से नेशन है? U स्टैंड फॉर USA, A स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलिया, एक अपना प्यारा देश भारत इंडिया, और दूसरा क्या होगा हमारा? जापान. तो आपको 2 तो याद ही होंगी. क्वाड इटसेल्फ, U स्टैंड फॉर USA, A स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे अपना प्यारा देश भारत और जापान. So Quad are not military agreement, and if they are not military agreement, they can be considered as geo-economic agreement that can also help members to pursue their geopolitical interest. Significance क्या Indo-Pacific region for India का? Strategic significance. Indo-Pacific is a multipolar region contributing more than half of the world's GDP and population. उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB बैंक, कंट्रीज इन इंडो पैसिफिक प्रोड्यूस ओवर 60% ग्लोबल GDP, मेकिंग द रीजन द लार्जेस्ट सिंगल कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल वेल्थ. कॉमर्स. द रीजन कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स वाइटल चौक पॉइंट फॉर द ग्लोबल कॉमर्स इंक्लूडिंग द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एंड वेरी क्रिटिकल फॉर द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड इकॉनमी. तो आपको इससे पहले समझना होगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्वाड. अब देखो क्वाड का मतलब 4 होती है, तो 1 2 3 4 ये 4 कंट्री का नेशन है क्वाड. सो क्वाड में आपका ऑफिशियली इज द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. इज नॉट अ फॉर्मल अलायंस, इट इज एन इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम कंप्राइजिंग 4 मैरीटाइम डेमोक्रेसीज, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैरीटाइम सिक्योरिटी, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, combating COVID-19 pandemic, among others. The Quad is also seen as an attempt to counter the growing might of China, because China की आपकी जो हमारे पास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके काउंटर में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और चाइना नेवर वांट्स कि ये 4 कंट्री का क्वाड अलायंस हो. द क्वाड 1.0 की शुरुआत कब हुई थी? इन 2004 में हुई थी, जब इंडिया में हमारे पास सुनामी हुए थे 2004 में, एंड द एरिया ऑफ कन्याकुमारी वॉज सबमर्ज्ड. Conducted relief and rescue operation in the region. The group was disbanded after 2004-5 operation. Former Japanese Prime Minister Shinzo Abe डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे, और इनकी अभी रिसेंटली असैसिनेशन होगी. तो लाइक माइंडेड कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन ऑन द थीम्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट. बाद में इसको फिर से ऑस्ट्रेलिया ने काम करना शुरू किया. 2007 में फर्स्ट इनफॉर्मल मीटिंग हुई. मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज हमारा हुआ यहाँ पे, और फिर शिंजो आबे ने रिजाइन कर दिया. PM में फॉल हो गया इसका. द क्वाड सिटर कैल्विन रड बिकेम PM ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ग्रेजुअली द कंट्री backed out of the arrangement, presumably due to pressure from China. The alliance gradually fell apart. Quad 2.0 का रिवाइवल फिर से अगेन स्टार्ट 2017 में. जापान ऑफिशियली proposed the revival of the Quad. The first working level meeting under the Quad took place in Manila. 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया ट्राइलेटरल इंडिया US जापान मालाबार नेवल एक्सरसाइज को आफ्टर मोर देन अ डिकेड. तो देखते हैं क्वाड वर्क कैसे करता है. क्वाड लीडर्स 2021 because of the COVID that they met virtually. The first in-person meeting of Quad leaders, US President Joe Biden host India Prime Minister Narendra Modi, Australian Scott Morrison and Japanese PM, the name was Yoshihide Suga. So how the Quad works? The Quad is loose grouping rather than a formal alliance. ये formal alliance नहीं है. Formal alliance which means they are bound to follow the rules which is to be followed by the UN and other trade agreement. It does not have a decision making body और a secretariat नहीं है इसका. a formal structure like NATO टाइप से नहीं है, United Nations टाइप से नहीं है. The alliance is maintained through summits, meetings, information exchanges and military drills. It does not have a rigid framework and nations are free to unlink themselves from a specific Quad initiative. So this is all about geopolitics and geo-economics of India. I hope कि you all students enjoy the lesson a lot. और आप यहाँ पे that we have already discussed this one.
what India can be done. Conclusion अगर आप शॉर्ट में देखें तो वर्ड ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर एस जयशंकर, मिस्टर का नाम आप याद रखेंगे, मिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है. जियोपॉलिटिक्स फॉलोज द जियो इकोनॉमिक्स एंड नॉट वाइस वर्सा. जियो इकोनॉमिक्स जियो पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं करता, बट जियो पॉलिटिक्स फॉलो करता है जियो इकोनॉमिक्स को. Geo-economics is inclusive of geo-economics. India should integrate itself in multilateral trading in platforms and leverage its big market to bargain the best deal for itself. So I hope students you enjoyed our YouTube session a lot. Deep dive में जो भी doubts and query होती है, please let us know in the comment section. Our entire Pratham team will help you out in each and everything. I hope कि आपको ये सेशन अच्छा लगा. If you are new in this channel, please like, comment and subscribe and press the bell icon so that you will get the notification of every YouTube session here. Enjoy your day. Bye bye and take care. We'll meet you tomorrow and daily news analysis session sharp at 11:30. अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रखें. Bye bye and thank you so much for joining us.